Hello, guys. You're watching FC Popcorn. This is a Film Companion original. I'm Vishal, and I'm just somebody who watches films and who creates content on FC Local, and I have my own channel as well. And here I have Aritra, जिनको बंगाली सिनेमा का बहुत ज़्यादा knowledge है, and at the same time he's a Bollywood fan as well. Welcome, Aritra. Yeah, thank you, Vishal. And then we have Hriday, and who is like, I really like your reviews basically. I find them cinematically, मतलब quality उनकी बहुत अच्छी होती है. मुझे लगता है what you talk about is good, and then you have this comical take on things. So this is something I really appreciate as well. So welcome, Hriday. Thank you, Vishal. Hello, Aritra. This is the title of the podcast. Basically, we're discussing Bollywood remakes and the sequels that have been announced. Actually, ये जो चीज है मैंने एक देखा है, नोटिस किया है. मैं हिंदी सिनेमा बचपन से देख रहा हूँ. Like when I was growing up, I was not watching Bengali films, क्योंकि तब जैसी फिल्में बनती थी 90s में, वो बहुत ही आउटडेटेड होती थी और वो जनरली रूरल बेल्ट के लिए बनती थी. हमारे यहाँ पे बंगाली फिल्म का एक क्लियर डिमार्केशन है. दिस फिल्म इज फॉर अर्बन सेंटर एंड दिस फिल्म इज फॉर रूरल सेंटर. तो वो जो रूरल बेल्ट के लिए जो फिल्में बनती थी वो हमारे घर में नहीं चलती थी. मैं कोलकाता से हूँ, तो वहां पे वो चलती नहीं थी. तो हमने ज्यादातर हिंदी फिल्में ही देखी है. शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, अक्षय कुमार. सो तो उसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ. फिर बाद में मैंने साउथ सिनेमा धीरे धीरे डिस्कवर किया. लेकिन मैंने देखा है कि बॉलीवुड में पता नहीं, बिकॉज अ लॉट ऑफ मनी इज राइडिंग ऑन द स्टार्स ऑन द फिल्म, एक हर्ड मेंटालिटी है कि कभी भी कोई चीज अगर वर्क करती है तो वो एक ट्रेंड बन जाता है अगले 5 सालों के लिए. जैसे मुझे अभी भी याद है, सलमान खान ने कमबैक किया था अपना 2009 में. पोकड़ी का रीमेक था वांटेड, और उसके बाद से एक 7 साल का एक ट्रेंड चला जहां पे सिर्फ साउथ की फिल्में रीमेक हो रही थी. अक्षय कुमार ने विक्रमार्कुडू का रीमेक किया, राउडी राठौर बनी. फिर सलमान खान एक के बाद एक रीमेक कर रहे थे. फिर अभी अब देखेंगे तो वो रीमेक का मार्केट डाई डाउन हो रहा है, क्योंकि साउथ फिल्म का एक बूम हुआ है यूट्यूब की वजह से. और फिर अभी सीक्वल का एक शुरू हो गया लास्ट ईयर से, जब से दृश्यम 2 और भूल भुलैया 2 हिट हुई है. सब एक के बाद एक धड़ाधड़ सीक्वल अनाउंस कर रहे हैं. तो वो एक के बाद एक सीक्वल्स अनाउंस हो रहा है. तो मुझे मतलब कुछ चीजों के लिए डेफिनेटली, जैसे हेरा फेरी का जो पार्ट आ रहा है उसके लिए मैं एक्साइटेड था. लेकिन अभी आवारा पागल दीवाना का भी पार्ट 2 आ रहा है, इसका भी कोई पार्ट 2 3 आ रहा है, भूल भुलैया का 3 भी आ रहा है अभी. तो ये मतलब चीजें कुछ ना मतलब एक फ्रस्ट्रेटिंग होती है फैन, मतलब एज अ फैन, मतलब आई एम फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड कि ये सिर्फ एक मतलब इस फॉर्मूले को आप एनकैश कर रहे हो. यू आर नॉट, मतलब आप मेहनत नहीं कर रहे हो फिल्म पे, स्क्रिप्ट पे. तो वो खराब लगता है. तो यही डिस्कस करना चाहता था मैं. आप लोगों का क्या टेक है इस पे? बिल्कुल, मेरे को भी ऐसा फील होता है कि जैसे फिल्म्स लाइक हेरा फेरी 3 जो अभी अनाउंस हुई, एंड उसका नाम एक्चुअली हेरा फेरी 4 रख रहे हैं शायद, समथिंग लाइक वेरी वियर्ड. एंड सी, मुझे तो ऐसा लगता है दिस इज लाइक अ इजी मनी अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, बिकॉज सबको लगता एवरीबडी ट्रिप्स ऑन नॉस्टैल्जिया अ लॉट जब व्हेन दे गो फॉर अ सीक्वल. जैसे फॉर एग्जांपल भूल भुलैया. भूल भुलैया 1 वाज लाइक बचपन में बहुत देखी थी, एंड इट वाज अ गुड फिल्म. प्रियदर्शन वाज ऑन अ रोल विद दीज कॉमेडीज. बट देन अगेन भूल भुलैया 2 जब, एंड वी ऑल नो कि क्वालिटी वाइज वो कितनी नीचे थी कंपेयर टू भूल भुलैया 1. So this is when the film was a huge hit, and the original films were not working. So I think this is just something which a lot of producers do to cash in money, and not for really creating original characters. I would really love to listen to Hriday, because a lot of films are remakes of South, और कभी-कभी sequels भी South से ही inspired होते हैं. So what's your take? No, I feel like, see, the idea of a sequel is a complete Hollywood idea, right? And I feel like Hollywood is the industry that really made sequels popular. I mean, whether it is your regular movies like the Avengers and Marvel movies, or even the greats, like even The Godfather was a 3-part sort of a series. So I think the idea of the sequel is a very Hollywood import as an idea. But it has, I always find that sequels flourish when there is a bankruptcy of general ideas, right? If you look at Hollywood in the last 5-6 years, there haven't been a lot of variety in the movies, and you can see that directly a correlation with how many Marvel sequels keep coming. So I feel like Bollywood now is turning to sequels probably due to a bankruptcy of ideas, because it's a very new idea. I remember when in 2003 or 4, when this movie came that was supposed to be the sequel of Vastav, the Sanjay Dutt movie. It was called Hatya. Hatya.
and that was told. It was called as the first sequel in India. So the history of sequels in India is also very, very recent. It's about 15, 20 years old, right? I don't know how true the fact is, but at least it was promoted like that. Like it was called India's first sequel. And I feel with the Hindi cinema now falling back upon sequels is probably a bankruptcy of ideas. And that's why they are cashing in on nostalgia that, okay, if they like this movie, then we can probably mint that. I think it basically comes down to a bankruptcy of ideas. Well, that's absolutely true. But don't you think that because you're following a formula, it will easily die down? जैसे ये रीमेक्स जैसे बन रही थी, उसका लॉन्जिविटी बहुत कम है. वो जैसे आप 3-4 साल बाद वो डाई डाउन हो जाएगा. जैसे लास्ट ईयर फिल्म है विक्रम वेदा. इट वाज सच अ विद अ ह्यूज स्टार कास्ट, बट इट फेल्ड बिकॉज ओरिजिनल विक्रम वेदा अवेलेबल थी. तो आपको नहीं लगता कि व्हेन यू आर फॉलोइंग अ स्ट्रक्चर व्हिच इज अ फॉर्मूला, तो वो बहुत जल्दी इट विल वॉश आउट, और जैसे ही वो मतलब वो बर्स्ट होगा बबल, उसके बाद इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड अ न्यू फॉर्मूला. सो दैट्स व्हाई आई थिंक देयर आर सम फेजेस जहां मतलब एक एक साल, जैसे 2017 गया था या 2022, ये सारी फिल्में पिट रही है एक के बाद एक के बाद. तो उसको रिटर्न मतलब कम बैक करने में भी एक इंडस्ट्री को टाइम लगता है. सो दे शुड, डोंट यू थिंक दे शुड वर्क ऑन, लाइक इफ दे आर लाइक फॉर मतलब मॉनेटरी पर्पस की वजह से वो लोग बना रहे सीक्वल्स, लेकिन साइड बाय साइड ओरिजिनल फिल्म पे भी काम करे, उस पे स्क्रिप्ट पे भी काम करे, नए डायरेक्टर्स को अपना वॉइस लाने दे. डोंट यू थिंक दैट? I mean, as a viewer or as somebody who reviews movies, I would like that, but I can totally understand why producers are going for sequels. Because, like, I don't think film producers look at cinema as much as an art as we do. कि हमको लगता है, I mean, pardon my Hindi, but it's like, हमको लगता है कि, they're all out there to create works of art, right? Because we are trying to dissect it at an artistic level, but maybe for them it is not that. Maybe it is for them, how much money I can earn from the movie. So I can completely understand why sequels are now flourishing, because the last 2-3 years have been probably one of the few of the worst years for Bollywood, right? Just if you talk about box office revenues. So I think it will die down slowly, the trend, but it is here now. I mean, you cannot deny that for the next 3-4 years we will be bombarded by sequels. Yeah. And I'm curious to see what shape that takes, because now a lot of unique South filmmakers are also adopting that model. If you see Lokesh Kanagaraj, he is now going to come up with Kaidi 2, and so he's trying to create a multiverse of his own. So I'm very curious, and I'm not being too judgmental about it, because honestly, if I were a producer in Bollywood, what else could I do? I tried bringing original stories, they didn't work. I tried bringing South stories that worked, they didn't work here. So what else do I have? I can kind of empathize with the Bollywood producers now resorting to sequels. Guys, what I think is कि Bollywood में तो ना especially एक और चीज बहुत मैटर करती है कि सुपरस्टार्स का करियर रिवाइव करने की कोशिश की जाती है सीक्वल से. मुझे ऐसा लग रहा है कि हेरा फेरी 3 का बनना या आवारा पागल 2 में इफ देयर इज अक्षय, आई डोंट नो कि उसमें अक्षय है कि नहीं अभी, बट इफ देयर इज अक्षय तो डेफिनेटली इट्स लाइक अ करियर रिवाइवल मूव. Because a lot of films are not working for Akshay. Then again, if I give another example, Gadar 2, मतलब Gadar 2 की ज़रूरत ही नहीं है. Like it's very clear Gadar 2 was a huge film when I was growing up. और अब जैसे Gadar 2 आ रही है, and Sunny Deol has been out of the films for a long time. मतलब बीच में करते रहते, but इतना कोई कुछ बड़ा सा कुछ ऐसा आया नहीं है सिवाय चुप के. तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये स्टार रिवाइवल भी एक चीज है, एंड दिस इज लाइक मेरे को तो ऐसा लगता है बहुत इनसिक्योरिटी है सबको. लाइक एज अ स्टार सबको बहुत इनसिक्योरिटी भी है कि उनकी ओरिजिनल फिल्म नहीं चल रही तो किसी पुरानी फिल्म का सीक्वल बनाए थे. एंड आई एम वेरी श्योर कि जो उनके सीक्वल्स आ रहे हैं ना, वो बहुत ही एवरेज फिल्म जैसे होंगे. कोई उसका नाम अगर आप हेरा फेरी 3 की जगह कोई हाउसफुल 2 रख देते, 3 रख देते, वो भी सेम, कोई चक्कर नहीं. द फिल्म माइट बी एज मतलब रूटेड लाइक द ओरिजिनल फिल्म्स, बिकॉज उनकी एक इनोसेंस थी उन फिल्म्स की, चाहे वो कितनी भी प्रॉब्लमैटिक कॉमेडीज थी तब, बट उनकी एक अपनी ही एक इनोसेंस थी उस टाइम की, जो मुझे लगता है इस टाइम पे पुल ऑफ करना मुश्किल है. एंड आई रियली फील कि गदर जैसी पॉलिटिकली साउंड फिल्म को अब इस टाइम पे पता नहीं किस तरह की स्टोरी होगी.